बच्चों अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस पे। गाइस देखो, कलर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इट इज ड्यू टू excitation of electron from T2G to EG orbital. Basically, DD transition is responsible for color of compounds of D block elements. ये तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में पढ़ोगे इन डिटेल। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू मस्ट रिमेंबर द कलर्स ऑफ मेटल आयंस equated in water. What is the color? Okay. Equated metal ions का कलर तुम्हें पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। Sc3+ कलरलेस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। इट हैज गॉट D0 कॉन्फ़िगरेशन, तो इट इज कलरलेस। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सेम गोज फॉर Ti4+, दैट टू इज कलरलेस, अगेन D0 कॉन्फ़िगरेशन। Ti3+ is purple. V4+ is blue. V3+ is green. V2+ is violet. Cr3+, that too is violet. Mn3+, again violet. Cr2+, blue. Mn2+, pink. Fe3+, yellow. Fe2+, green. CO2+, pink. Ni2+, green. Cu2+, blue. Zn2+, इसमें तुम्हारा d orbitals are d subshell is completely filled, d10 configuration, so there is no possibility of dd transition, it is colorless. जिनमें dd transition की possibility नहीं है, those are colorless. ये पहले दो और ये लास्ट Zn2+। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स form complexes because one, small size of metal ions,
उनका रिलेटिवली कंपैरेटिवली स्मॉल साइज होता है। हाई चार्ज ऑन मेटल आयंस, बेसिकली छोटा साइज हाई चार्ज, तो हम क्या कह सकते हैं, हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, चार्ज टू साइज रेशियो। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbitals for bond formation. These are the reasons why they form complexes. अब आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पे। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स and their compounds are used as catalysts. Why? The main reason is due to tendency to show variable oxidation state. और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। इस कारण दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर देयर प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिंग एज कैटलिस्ट। ठीक है ना। दूसरा, कैटलिस्ट फर्स्ट form an intermediate with reactant which then decomposes to form product and catalyst is regenerated. Okay, example catalyst का, oxidation of SO2 to SO3 in presence of V2O5 as catalyst. ठीक है। V2O5 vanadium oxide, vanadium pentaoxide that acts as catalyst। ठीक है बच्चों, देखो हाउ इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ये देता है वेनेडियम रिड्यूस होता है, सल्फर ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया, वेनेडियम रिड्यूस हो गया। क्लियर है गाइस। अब जो V2O4 है वो O2 के साथ खुद ऑक्सीडाइज होगा अगेन टू V2O5 और हमारा ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा।
वेनेडियम ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया बच्चों। क्लियर है गाइस? बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग कर लोगे तुम, आई गेस दैट इज हाउ इट विल बी बैलेंस्ड। ठीक है बच्चों, तो फिर से देखो, पहले हमारा SO2 को उसने ऑक्सीडाइज करा, खुद रिड्यूस हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ। मतलब V2O5 पहले हमारा रिड्यूस हुआ, बाद में वो V2O4 इज अगेन ऑक्सीडाइज टू गिव अस V2O5। ठीक है बच्चों, नेट रिएक्शन देखोगे, अगर तुम नेट रिएक्शन देखोगे, बैलेंस करोगे, तो इट विल बी 2SO2 plus O2 giving 2SO3. That will be the net reaction. Net. ओके, वेनेडियम पहले +5 से, मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, +5 से पहले ये गया +4 पे, और फिर +4 से वो फिर वापस गया +5 पे। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। Fe2 plus catalyzes the reaction between I minus iodide and persulfate and persulfate। परसल्फेट को हम पर ऑक्सो सल्फेट भी बोलते हैं। ये है क्या? दिस इज H2O8 माइनस टू गिव I2 एंड SO4 माइनस आयंस। देखो बच्चों रिएक्शन कैसे आती है। ये मैंने Fe2 प्लस क्यों लिख दिया, Fe3 प्लस, माई मिस्टेक। तो Fe3 प्लस प्लस I माइनस, बच्चों क्या करेगा? आयरन रिड्यूस होगा, I माइनस ऑक्सीडाइज होगा, आयरन +3 से +2 जाएगा, I माइनस ऑक्सीडाइज होगा टू I2। क्लियर है? अब जो Fe2 प्लस है वो H2O8 के साथ, नाउ आयरन विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस विल बी रिड्यूस्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? पहले आयरन रिड्यूस हुआ, I माइनस ऑक्सीडाइज हुआ, अब जो Fe2 प्लस बना वो वापस ऑक्सीडाइज हुआ, और H2O8 रिड्यूस हुआ। क्लियर है गाइस? समझ गए? नेट रिएक्शन अगर तुम देखो तो दैट इज I माइनस प्लस H2O8 गिविंग I2 प्लस SO4 समझ गए बच्चों? अगर तुम रिएक्शन देखो तो उसमें Fe3 प्लस इज रीजनरेटेड, पहले Fe3 प्लस Fe2 प्लस में गया, और वापस Fe2 प्लस हैज बीन कन्वर्टेड टू Fe3 प्लस, इट हैज बीन regenerated, Fe3 plus has been regenerated, catalyst has been regenerated। समझ गए गाइस? अब आते हैं कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करे जाते हैं? तो गाइस देखो, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उसमें यूज कैटलिस्ट। पहला, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। बच्चों क्या रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन होती है। इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है
catalyst is finally divided iron. Molybdenum as promoter. कंडीशंस क्या यूज होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं? 200 बार प्रेशर, 723 to 773 Kelvin temperature. Nowadays, a mixture of iron oxide, potassium oxide, and alumina are used. आजकल ये यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, Ostwald process for manufacture of nitric acid. पहले हम NSC plus O2 gives NO plus H2O. बैलेंसिंग भी जरा देख लो गाइस। ये रहा। Now NO is oxidized to give NO2, and then NO2 plus H2O plus O2 gives HNO3. अब इसके लिए कैटलिस्ट क्या होता है? It is platinized asbestos. Temperature 573 Kelvin. Temperature 573 Kelvin. अब आते हैं थर्ड पे, कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम पहले SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, उसके बाद SO3 plus H2SO4 gives H2S2O7. That's oleum. And H2S2O7 plus H2O, that is, on adding H2O you get H2SO4. On adding more amount of H2O you get H2SO4. इसके लिए catalyst is platinized
or vanadium pentoxide, V2O5. Temperature 673 to 723 Kelvin. ठीक है बच्चों, we are done with catalyst. Now let us go on to formation of non-stoichiometric and interstitial compounds. तो गाइस इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? Interstitial compounds are formed when small atoms, small sized atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, boron are trapped inside crystal lattices of metals. They are usually non stoichiometric. They are usually non stoichiometric. Okay? And neither typically ionic or covalent. ये एटम क्या करते हैं? ये जो स्मॉल साइज्ड एटम्स हैं, they go into the interstices or voids present between the atoms forming the lattice. These are the atoms forming the lattice. इनके छोटे रीजन्स में, इन voids में, इन voids के अंदर स्मॉल साइज्ड एटम्स ट्रैप हो जाते हैं. तो these small atoms enter the voids या interstices between atoms of lattice. Atoms forming lattice. Okay. Often non-stoichiometric material is obtained. Example V H 0.56
Ti H1.7, Fe 0.980, Fe 0.86s, etc. इसीलिए इन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि द स्मॉल एटम्स गोज इनटू द interstices or voids present between the atoms forming the lattice. Physical and chemical properties of interstitial compounds. Physical and chemical properties. पहला, high melting point. Higher than those of pure metals. Next, very hard. Some borides approach diamond in hardness. Next, they retain metallic conductivity. Next, they are chemically inert. ओके, अब आते हैं अलॉय फॉर्मेशन पे. अलॉय फॉर्मेशन. अलॉयज होते क्या हैं? दे आर होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशंस. फाइन. Alloys are hard and often have high melting point. But melting point of alloys is less than individual metals. ज्यादातर हम अलॉयज जो देखते हैं वो फेरस अलॉयज देखते हैं. क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, are used for production of variety of steels and stainless steel.
ओके। अच्छा गाइस, तुम्हें डिस्प्रपोर्शनेशन पता है? डिस्प्रपोर्शनेशन इज जब सेम एटम या सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। तो गाइस MnO4 2 माइनस, 2 माइनस, ये हमारा डिस्प्रपोर्शनेट करता है टू गिव MnO4 माइनस एंड MnO2। ओके। ये +6 से जाता है +7 और +4 बच्चों। ठीक है गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड।